हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ऋषभ तिवारी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट जी ओ बी अ ग्रुप। Let if possible, let if possible, E1 and E2 be two identity elements, identity elements ऑफ जी। तो हमने क्या किया, हमको यूनिक प्रूफ करना था, तो हमने उल्टा लेकर चले और हम बोलेंगे कि यहाँ अगर हम उल्टा लेकर चलते हैं तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। ओके, सो लेट इफ पॉसिबल E1 and E2 be two identity elements of G, then since E1 is the identity element, then what will happen? E1 into E2, E1 O E2 is equal to E2, क्योंकि हमको पता है कि if G is a group O with an operation O and E is an identity element of G, then for all A belonging to G, A O E is equal to E O A is equal to A, है ना। तो A का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? E2, और E का काम कौन कर रहा है? E1। अगेन, since E2 is also the identity element, ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। देयरफॉर E1 O E2 will be equal to E1, so this is equation 2. So from equation 1 and 2, what we get is E1 is equal to E2, है ना, that is the identity is, है ना, therefore the identity element is unique। Thank you।